अब हम बात करेंगे ट्रिप्सिनाइजेशन की और सब कल्चरिंग की। जैसा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल कल्चर के हवाले से जिक्र हो चुका कि प्राइमरी कल्चर्स को जब हमने एक्सपैंड करना होता है देन वी नीड टू डू सब कल्चर्स। और मोनोलेयर सेल कल्चर्स जब लेके हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में चल रहे होते हैं तो जो मेजर प्रॉब्लम होता है सेल्स को सेपरेट करके फर्दर प्रोसेस करने के लिए, because the monolayers they are adherent cells and they are attached with the base of the culture flask or culture dish. तो सबसे पहला स्टेप जो है we have to separate them, we have to dissociate these cells from the culture flask. For that purpose we need to do trypsinization. प्राइमरी कल्चर को नॉर्मली तो ग्रो किया जाता है 60 मिलीमीटर साइज की पेट्री प्लेट में या फिर 25 स्क्वायर सेंटीमीटर culture flask में. Besides this, there are number of different cell culture wares which can be decided on the basis of your requirement, on the basis of the experimental needs. If you look at this picture, we have microwell plate, then we can see some 6-well plate here. Besides that, we have the culture flask of different size here. Then these are the petri plates of different sizes and the culture dishes having different sizes. Well, this is the choice of the researcher to decide कि हमने कौन से culture flask या कौन सा culture plastic ware use करना है to perform the sub culture. जब सब कल्चर की तरफ जाते हैं इस पूरे प्रोसेस को और स्टेप को जब आप ट्रिप्सिनाइजेशन करके सेल्स को डिसोसिएट करते हैं, उनको डाइल्यूट करके नेक्स्ट प्लेट्स में उनको स्प्रेड करते हैं, दिस मेक्स अ पैसेज दैट यू पैसेज द सेल फ्रॉम 1 टू द पैसेज नंबर 2 और फ्रॉम 2 टू पैसेज नंबर 3. इस पूरे प्रोसेस के लिए वी नीड सम मटेरियल्स एंड दीज मटेरियल्स कैन बी कॉमन in most of the cell culture experiments, but some specific materials are required keeping in view the cells of different types. For example, we need the source cell, the primary cells which we are going to subculture. Then we need HBSS, Hanks balanced salt solution without calcium and magnesium. इस HBSS solution को हम use करते हैं for washing purpose. जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा cell culture मीडियम है उसमें हमारे पास सीरम होता है. वी नीड टू रिमूव द सीरम फ्रॉम द सेल्स और ट्रेसेस ऑफ द सीरम before we can proceed the trypsinization. So this kind of medium is required for washing. Then we need trypsin and we need complete medium for the cell culture for performing the passage or to subculture the cells. अब एक चीज़ जो हमें यहाँ पे ख्याल रखना है, जो भी हम solution use करते हैं, whether this is a trypsin solution or whether this is the culture solution, these were stored at 4 degrees centigrade or in the fridge. We need to pre-warm them at 37 degrees centigrade, because अगर pre-warm नहीं करेंगे then these solutions at colder temperature may have some effects on the cells. Besides this, we need sterile pasture pipettes, we need 37 degrees centigrade incubator, and the plastic ware depending upon the need of the experiment, whether you need flask, whether you need the petri plates or whether you need the multi-well plates. Once the subculture is done, it needs to be stored at 37 degrees centigrade in 5% carbon dioxide incubator. Again, experimental needs के ऊपर depend करता है. We may have to vary the carbon dioxide concentration. In some cases, we may need to have the low concentrations of oxygen depending upon the type of cell, depending upon the experimental needs. We can adjust the conditions, but this is for sure mandatory that the incubator should be humidified. Temperature should be 37 degrees centigrade. The variables are the carbon dioxide concentration and the oxygen concentration.